Okay, yeah. Hi, good evening, everyone. Yes, Yeah. Shruti, go Good ahead. evening, Pinaki ji. On the Tuesday session, you told us, to think who we want to be. Okay. Who I want to Maybe be is who I want to be and maybe until March 2026. March 26, yes. In Yeah. 21 weeks, yes. Yeah. So what I did was like for me, I always, feel that Ratan Tata is a mentor. Okay, Hmm. for everybody. And he's my inspiration. So I was like, okay, long term goal, I know I want to be my like him. Then I could actually, simplify my goals, like who I want to be into 6 months. So I have a cousin, she's a very renowned designer. So I could, okay, 6 months, 1 year, I want to be there. Then I could say, okay, I want to be more resilient, more peaceful and calm like this person. So, I was able, now whenever I'm free, I am not thinking about anything. Only this question comes into my mind, who you want to be. Are you writing them down? लिख रही हो? I have written only once yesterday, not today, but I Hmm. will write it today. रोज लिखो और जब भी ये सवाल दिमाग में आए तब भी आइडेंटिफाई करो व्हाट आंसर यू आर गेटिंग एंड जस्ट राइट इट डाउन. नोटबुक पे ना लिख सको मोबाइल पे ही लिख लो एंड देन यू गो बैक home and write it down in a notebook. The point is that you just assign a notebook for this because this notebook will be your personal assistant for next 21 weeks. And it is going to be a phenomenal program, I promise you. मतलब उसमें हम लोग एनएलपी प्रैक्टिशनर कोर्स और मास्टर प्रैक्टिशनर कोर्स में जो जो चीज सिखाया जाता है उसका कोर लेके हम काम करेंगे. Wow. Core लेके like I believe working on lot of things like as we are talking about questioning, we will be talking. ये questioning का purpose क्या है? Questioning का purpose जो main है, it is all about chunking, application of chunking technology. Correct. Chunking, तो अभी हम सिर्फ chunking up की बात कर रहे हैं, chunking down की बात नहीं कर रहे हैं, because chunking up is the most important one, so that I can get access to the purpose. है ना? So what I want to be is very very important. The moment you write what I want to be, immediately next question will come is why I want to be. वाई का मैंने बात किया नहीं बिकॉज वाई आई विल टॉक अबाउट नेक्स्ट ट्यूसडे. बिकॉज मैं अब पूरा प्रोग्राम को स्ट्रक्चराइज कर रहा हूँ, उसको ग्राफिक वगैरह बना रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन काफी हद तक है बट आई जस्ट वांट टू पुट इट इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट सो दैट आई कैन डिलीवर इट एज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम. तो this question is extremely important which you need to have an answer before next Tuesday. सारा दिन सोचती रहो कि what I really want to be by March 2026, end of March 2026, what I really want to be. See, unless you have a clarity of purpose, you cannot move in the direction where you're supposed to move. But Because, I didn't know this question can be this powerful. Matlab, it yes, is playing so much in my subconscious mind. कभी कभी वो आपको डरा भी देगा. वो सिचुएशन जब आएगा वो आना बहुत जरूरी है मैं because उसमें 5 बजे उठ रही हूँ उसके वजह से. मैं मतलब आई एम नॉट वेकिंग अप बिकॉज ऑफ वेदर चेंज. आई हाँ एम बीइंग स्लाइटली लेजी. हाँ But every day it is making me wake up at 5 and I'm हाँ still thinking who I want to be, what I want to be. ना बहुत जरूरी है because what I observed that last year मतलब during the same time almost about 100 days ago before the year end or 3 months ago before the year end, everybody was with a program, like all the coaches were launching, we are talking about a program that how you are going to design your year 2025, है ना? Yeah. There was a lot of training programs, like many coaches were doing that. The only difference which I did, I launched a program which was NLP in action, and my whole objective was to ensure that everybody should be in action. So year 2025 will be all about action. Rajeshwari was there, so she knows that entire 2025 we were all into action. So I learned 3 batches of that program, and after that the 4th batch is yet to be launched. You were mentioning Before about I come to that, I am basically working with all these new concepts, new technologies, so that I can make that program even more powerful. This is also part of that program only. मतलब मैंने अलग से okay. declare नहीं किया, but this is also part of that program where we are working on ourselves for next 21 weeks. And what I discovered that why people couldn't take action over last 1 year, just because they really do not know what they want to become. And since you have no clarity on what you want to become, you have no role to play that what action you are supposed to take. That मान is के true. चलो अगर तुम्हें पता ही नहीं कि वैकेशन में कहाँ जाना है तो क्या होगा, तुम घर पे ही रहोगी ना. हाँ.
सो वेकेशन में कहाँ जाना है, वही मोबाइल पे नेटफ्लिक्स देखना है, यही यही मेरा डेस्टिनेशन है। कि उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करना है, खाली मोबाइल खोलो या लैपटॉप खोलो, नेटफ्लिक्स में लॉग इन करो, ऐप खोल दो और देखती रहो, है ना। Correct. उसके लिए कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और सो व्हाट यू actually telling you, so what I want to become, I want to become a Netflix watcher or Netflix viewer. That is what you are declaring yourself. And naturally कुछ और काम नहीं मिल रहा तो डिफॉल्ट वही हो रहा है. So this is the reason why many people couldn't fruitfully utilize this entire 1 year or last 10 months of this year, है ना. शुरू शुरू में बहुत जोश रहता है, but eventually just जोश Correct. fades away because you have no purpose in life. You really do not know what is my purpose in life. Now, Okay. identifying the purpose in life itself is a very complicated task. आपको लगेगा कि ये मेरा पर्पस इन लाइफ, फिर लगेगा नहीं शायद ये नहीं है, कुछ और है. And then you come across something else, then you come across some other video, then you take some other training. फिर कुछ लाइफ में इवेंट होती है, like one of the events that you are going through, and those events define that what you want to be, है ना. So आपका original purpose of life गायब हो गया. Now my purpose of life is recovering my loan. My purpose of life is completing this year with some kind of success, and I do not know what the success is all about, है ना. So purpose of life खत्म हो गया. Purpose of life is मेरे बच्चे 1 साल बड़े हो गए और बच्चों को बड़ा करना है. Purpose of life 1 साल में कितना कुछ चेंजेस होगा. My parents also got 1 year older. Older. Even I also got 1 year older, है ना. मैंने Correct. शायद प्लान किया था कि इस साल मैं इतने किलोमीटर दौड़ूं, हुआ नहीं. So by the time half of the year gone, I thought about चलो सुबह उठ के 5 बजे दौड़ना शुरू करते हैं, है ना. तो and then you're observing कि मैं कितना किलोमीटर दौड़ा, है ना. So and this is what we are doing, nothing wrong with that. The point is why this is happening, because we do not know the answer to this question कि ये सवाल हमने कभी अपने आप को पूछा ही नहीं. What I want to become, whatever I am doing, what I want to become. Even this money magnet program जो है, इसमें हमारा main objective क्या, see the game that we are playing is generating that 1 lakh rupee by the end of this year Yeah. from other resources, not from my Correct. mainstream resources or not from my existing clients, maybe some new clients. तो कहीं ना कहीं से मैं अपने लिए 1 लाख रुपए निकालूंगा, बनाऊंगा. I will raise that fund and I will use that fund only on me. उसका मैं पूरा मस्ती करूंगा, जो शायद आज तक मैंने कभी किया ही नहीं. मैंने तो कभी किया ही नहीं. तो मैं जैसे लोगों को बोल रहा हूँ, मेरे घर वाले भी बोल रहे हैं कि तुम 1 लाख रुपए लेके मस्ती करोगे, हम तो सोच ही नहीं सकते, है ना. मतलब देन माय डॉटर्स आर सेइंग, अच्छा ऐसे लड़के लोग कहाँ पे पैसे खर्च करेंगे, ना तुम शॉपिंग करोगे, कहाँ खर्च करोगे, अपने ऊपर खर्च करोगे ना. ना तुम घड़ी पहनते हो, ना तुम कॉस्टली मोबाइल खरीदोगे, ना तुमने डिसीजन ले लिया कि मैं कभी एप्पल का मैक नहीं लूंगा, मैक आई बुक नहीं लूंगा, मैं इसी से काम चलाऊंगा, आई एम हैप्पी विथ माय विंडोज लैपटॉप. तो तुम मैक भी नहीं लोगे, तो करोगे क्या 1 लाख रुपए से, हमें पहले बताओ. लोगों को तो तुम ज्ञान दे रहे हो, पूछ रहे हो कि पैसे इकट्ठे करो. सो actually it's a question I actually started asking myself, what I will do with that money now that I already have that money. By as I was taking the trainings, taking the sessions, I already got that 1 lakh with me. But honestly speaking, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रही है सोचने को उसको लेके मैं करूंगा क्या, अपने ऊपर मैं कहाँ खर्चा करूंगा, कैसे खर्चा करूंगा, कितना खर्च कर लूंगा. So but the point is that before I reach there, how about generating that fund from some other resources, existing clients. एक काम ये भी हो सकता है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट से भी अगर लेना तो आप वहां पे अपने चार्जेस बढ़ा दो, तो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास आ रहा है. सो यू आर इनोवेटिंग ways to generate those funds which you are going to spend only and only on you, and you only need to tell the universe one thing, that you are generating this money for me, है ना. तो आप मुझे उतना ज्ञान भी दो, डायरेक्शन भी दो, सो दैट आई कैन एक्चुअली मेक यूज ऑफ इट. मैं यूज नहीं करूंगा. सी लिसन टू दिस स्टेटमेंट. आई वाज शेयरिंग दिस स्टेटमेंट विद प्रवीणा टुडे, बिकॉज़ वी हैड दिस वन ऑन वन विद प्रवीणा. मैंने बोला कि प्रवीणा, जितना पैसा आप कमा रहे हो ना, वो कोई ना कोई यूज करेगा. या तो आप यूज करो, या तो आपके बच्चे यूज करेंगे, और उन्होंने अगर नहीं यूज किया तो बैंक यूज करेगा. ये सारा पैसा बैंक में है, बैंक को किसी न किसी को लोन देके पैसा कमा रहा है.
तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो कोई और जरूर करेगा, क्योंकि पैसे का धर्म ही ये है, वो कहीं पे बैठ नहीं सकता चुपचाप। आपको लग रहा है कि मैंने इसको रख दिया, आई एम नॉट यूजिंग इट, मैं इसको इकट्ठा कर रहा हूँ, उसमें इंटरेस्ट जुड़ रहा है या जो भी जुड़ रहा है, बट अनलेस एंड अनटिल यू यूज दैट मनी, यू लेवरेज दैट पावर ऑफ दैट मनी, it's of no use for you. Okay, now there is another power of money. See, if you observe carefully, इस बार हमारे देश में दिवाली कैसे मनाया गया? It was the most prosperous Diwali which happened this year. हमारे यहाँ तो अभी भी पटाखे फट रहे हैं, कोई ना कोई बहाना बना के। अभी छठ के रात को सारा रात मैं तो आई वाज शॉक्ड, यार हाउ कम दिस हैपेंड एंड पीपल हैव सो मच ऑफ मनी। नाउ व्हाट हैपेंड, सी, लाइक पूनम इज देयर, तो पूनम बहुत जल्दी समझ जाएगी इस बारे में। सी, an economy flourishes when the money flows in that economy, है ना? Yes, एक गांव true. था, है ना, एक गांव था, there इसी was से वो परचेजिंग पावर बढ़ा भी रहे ना, जीएसटी कम करके। और आफ्टर कोविड दे आर ट्राइंग टू कि लोग खर्च करें, और इनकम टैक्स में भी डिडक्शन हटा दिया, जिससे कि लोग ना खर्चा ज्यादा करें। absolutely, absolutely. तो आप, there's a beautiful story, this is a story of economics, the बहुत प्यारा story है, that how the flow of money actually improves the quality of a economy of a country or a place. There was a small village, उस विलेज में एक होटल था, एक बंदा वहां पे गया, वो होटल वैसे ही चलता था, छोटा मोटा होटल है गांव में, कैसे चलेगा, चल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो एक वहां पे एक विजिटर आया, गेस्ट आया और बोला कि मुझे एक रूम चाहिए, मिल सकता है? तो नेचुरली ओनर ने बोला हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, बिल्कुल मिल सकता है, आइए ना आइए। नाउ इन दैट विलेज पीपल वेर इनटू पॉवर्टी, पॉवर्टी था, लोगों के पास बहुत ज्यादा उधारी थी, मतलब ऑलमोस्ट एवरी पर्सन इन द विलेज is supposed to refund money to somebody, मतलब everybody owed some money to everybody, ऐसा कोई भी नहीं था कि जिसके पास कोई उधार नहीं था, या तो उसको, उसने किसी को दे के रखा है वो देगा, या तो उसने किसी से लिया उसको देना है। सो दिस वाज हैपनिंग इन दैट विलेज, और ऐसी इकोनॉमी चल रहा था। सो नाउ दिस गाय वॉकड इन, तो उन्होंने बोला कि एक रूम मिल सकता है? बोले कि हाँ मिल सकता है। बोले आप 1,000 रुपये एडवांस कर दीजिए एंड बाकी सब एंट्री वेंट्री हो गया। उसने 1,000 रुपये एडवांस कर दिया। नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? After that, whatever I am telling you, this happened in 20 minutes. उस बंदे ने क्या किया, उसने कहीं से कुछ उधार लिया था, किसी से कुछ उधार लिया था। He quickly went up and give that 1,000 rupees to him. उसने उसको 1,000 रुपये दे दिया, बोले कि अभी तेरा तो इतना इतना ड्यू है, 10,000 का ड्यू है, चल 1,000 मैं तेरे को दे देता हूँ। तो उसको 1,000 रुपये मिल गया। This person went up to the other person, उसने जहां से उधार लिया था। मान के चलो ये होटल होटल जहां से वाटर सर्विस लेता है, फॉर एग्जाम्पल देते हैं कि फूड सर्विसेज लेता है कहीं से, या कोई भी सर्विसेज लेता है, उसने वो पैसे ले लिए, उसको उसने दे दिया, तो कम से कम उसका 1,000 रुपये का लोन कम होगा। नाउ दिस पर्सन वेंट टू समबडी एल्स, उसने भी कहीं से लोन लिया था, उसने भी उसको 1,000 रुपये दे दिया। ऐसे करते करते व्हाट हैपेंड, आफ्टर 20 मिनट्स somebody came to this guy, the same hotelier, और आके बोला कि सर आपसे मैंने कुछ लोन लिया था, तो मेरे पास अभी 1,000 रुपये ये रख लो। Now imagine what happened. 1,000 rupees circulated in the economy and everybody was richer by 1,000 rupees, है ना? रिच मतलब उसने अपने 1,000 रुपीज का लोन खत्म कर दिया, जिसका भी जो भी अमाउंट का लोन था उसमें से 1,000 रुपीज का लोन उसने रिफंड कर दिया। तो 1,000 रुपीज रिफंड करने का मतलब क्या है? आई वॉज रिचर बाई 1,000 रुपीज। Okay, now imagine, just listen to this whole concept that I'm talking right now. This person again goes to that other person and gives that 1,000 rupees to him. ठीक है, उससे उसने 10,000 रुपये लोन लिया था, अब 1,000 रुपये दे दे तो अमाउंट रिड्यूस टू 9,000, उसने उसे 1,000 रुपये दे दिया, तो नाउ हिज अमाउंट रिड्यूस टू 8,000। इट फॉलोज ऑलमोस्ट द सेम रूट, एंड देन अगेन दैट गाय कम्स एंड गिव्स हिम 1,000 रुपीज, बोला कि यार ये 1,000 रुपये और तू रख ले, तो कुछ लोन रिडक्शन हो गया ना।
Now imagine that all these people had a loan of 10,000 rupees from each of them, and this 1,000 rupee note or 1,000 rupees, it circulated 10 times in that cycle, in that circle. है ना? That 1,000 rupee note circulated 10 times in that circle, and everybody is loan free. Let's. This is exactly what happened in Diwali this year. That's why people have so much of money and they're spending it. Are you getting the story? I want all of you to be on camera. Like this is a very small session that we have. I'm actually driving in a traffic. Okay, it's okay. So you got it now what I'm talking about. 1,000 रुपए का कितना power है? Just think about the power of 1,000 rupees. If there are 5 people included, 5 लोग अगर उस सर्किट में है, इमेजिन कर लो, तो 1,000 rupees ने 50,000 रुपए का लोन पूरा वेव ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया, है ना? 5 people, 10,000 rupees loan, 1,000 rupees, it circulated 10 times, सबका लोन खत्म हो गया. हुआ कि नहीं? Understand. This is pure economy, pure economics जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ. एकदम फाउंडेशन लेवल इकोनॉमिक्स. ये इकोनॉमिक्स अगर आप समझ गए ना, शायद अपना देश का इकोनॉमी बदल जाएगा. एवरीबॉडी विल बी रिच. अगर किसी के पास कोई लोन नहीं है, मान के चलिए आपका कोई होम लोन नहीं है, कार लोन नहीं है, just following this principle, everybody will be rich because now you have excess money. That's why money should be in circulation. इसीलिए वही बिजनेस सर्वाइव करता है जहां पे पैसा सर्कुलेशन में रहता है. If there is no cash flow, that business will become stagnant. Any industry, अगर किसी भी इंडस्ट्री को चलाना है तरीके से, the only thing that needs to be maintained, I'm not talking about that needs to be done, I'm talking needs to be maintained, is continuous cash flow. Cash flow होना चाहिए, cash circulate होना चाहिए in the economy, and that industry will survive. And this whole thing can be done with a very small amount of money. Only that money has to be circulated X number of times so that everybody is debt free. है ना? So this money magnet program, इसका ही foundation यही है, to understand the fundamental economy of survival. Economics of survival, the fundamental economics of survival. सर्वाइवल के बाद आपका abundance आ जाएगा, आपका prosperity आ जाएगा ऑटोमेटिक. अभी तो most of us are basically reeling under the game of survival. सर्वाइवल के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, सर्वाइवल के लिए सुबह घर से निकल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, सारा दिन ऑफिस में काम कर रहे हैं, फिर घर आ रहे हैं, फिर पता नहीं और क्या क्या कर रहे हैं. It's all about survival. That's why this question is the most important question which I shared with you on this Tuesday. That what do I want to become? Otherwise आप ना इसके अंदर फंसे रहोगे. पैसा आएगा जाएगा, पैसा आएगा जाएगा, पैसा आएगा जाएगा, and you won't become somebody. You will only become a person who is just looking at the money, looking at the numbers. That's it, and life is going on. Got that clarity just once.
1 month back, like from 6-7 years after clearing my CA, I was not having that clarity, like what I want to do exactly. एंड जब तक वो क्लैरिटी नहीं है आप कैसे एक्शन लोगे और क्या किस में आप एक्सपर्ट बनोगे, क्योंकि क्लैरिटी ही नहीं थी. Absolutely. आई गॉट दैट क्लैरिटी 1 month बैक. So now I know कि मेरा पास किधर है और मुझे क्या एक्शन लेना है. Absolutely. So be absolutely clear that who you want to become first. उसके बाद we can work out कि हमें क्या करने से हम वहां पे पहुंचेंगे. लेकिन अगर हम सिर्फ भागते रहते हैं, हमें पता ही नहीं कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कहाँ जाना है और क्यों जाना है. क्यों जाना we'll work on next week in this 21 question वाला session में. So and I'm connecting the dots with both the programs. वहां पे भी जो हम डिस्कस करें उससे हम किसी न किसी तरीके से इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. So naturally what we discussed over last 2-3 weeks in this money magnet program is all about how we play a money blame game with ourselves. All those 7 points, they were all discussed about that. The money sickness, which we are going through, we don't even notice and we don't even discuss with others. So go through those sessions and make yourself money sickness free. And साथ साथ पैरेलली इसको करते जाओ जो हमने अभी ट्यूसडे को शुरू किया. This 21 questions to shape your life. है ना. तो work on the first question, that who you want to become. उसके ऊपर जितने थॉट सारा दिन आ रहे, टेक अ न्यू नोटबुक, उसमें लिखते जाओ. आई वांट टू बिकम दिस, आई वांट टू बिकम दिस, आई वांट टू बिकम दिस. किसी के तरह नहीं बनना है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे किसके तरह बनना है. अभी खाली हमारा ये फोकस रहेगा हम क्या बनना चाहते हैं. आई एम अ यूनिक पर्सन, व्हाई शुड आई बिकम सम लाइक समवन. मेरी अपनी खुद की आइडेंटिटी हो, है ना. सो like 1 साल 1.5 साल पहले I thought about myself that okay, I will become India's first NLP in action coach. So before I declare that I'm going to become that, I figured out कि मेरे पास ऐसा क्या चीज है कि मैं अपने आप को यूनिक तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ लोगों के सामने. Then I did some experimentation. Some people who joined me, about 15-16 people joined me. I delivered a training program. उसको मैंने refine किया. Rajeshwari was there. उसको मैं refine किया. So she was there in all the 3 batches. In fact, everyone were in all the 3 batches. And we kept on refining the program. So that the day I declare myself to be India's only NLP in action coach, at least उस बात में थोड़ा बहुत दम तो होना चाहिए कि हाँ पिनाकी अगर डिक्लेयर करा तो he is like that. उसके बाद वो दम है. He is an NLP. He is not an NLP trainer certified. He is only certified NLP master practitioner. But the way he talks, talks about NLP, the way he is using NLP in real life, real time, that makes all the difference. खाली मेरा अभी ये रह गया है कि रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर से उनकी किताब पढ़ना. उन्होंने जो किताबें लिखी है ना, द स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक एंड अदर बुक्स जो उन्होंने लिखा है, मेरा खाली अभी वो रह गया है पढ़ना. What I have done over last couple of years, I have watched probably all their videos. जितने भी वीडियोस उनके YouTube में अवेलेबल है, शायद मैंने सारा देख लिया शायद. है ना. अपने एनएलपी प्रैक्टिशनर कोर्स जो मेरे नोश पवन का है, उसको मैंने कम से कम 12 से 14 बार रिव्यू किया है. कभी कभी लोगों के साथ रह के, कभी कभी रिकॉर्डिंग्स देख के. रिकॉर्डिंग देख के नहीं, रिकॉर्डिंग सुन के. मतलब देखा नहीं, बस कान में लगा दिया, सुन रहा हूँ. कोई ना कोई नई चीज दिख गया, कोई ना कोई नई चीज दिख गया. कभी कभी लगता है सेम बातें हो रही है, देन आई लिसन केयरफुली कि सेम बात वो कैसे कर रहे हैं. इट्स द सेम कैश रजिस्टर स्टोरी, but what the words that he is using while he was talking about that story. Listening to the words. And then I came up with my own way of putting things together. मैं बोल रहा हूँ NLP क्या है, आप जो शब्दों का इस्तेमाल करो अपने कम्युनिकेशन में, वही NLP.
शब्दों को चेंज कर दो and you are applying NLP in real life, real time. The moment you are changing a word, what is happening? You are doing two things. One is you are anchoring, second thing you are reframing. Because every word has its own anchor, and the moment you are using another word, you are reframing the sentence. So अभी उसको मैंने एक नया डायमेंशन दिया in this program, this money magnet program. How can I relate NLP with money? How can I relate spirituality with money? How can I connect these dots? So connect money, spirituality, and language. How can I do these things? इन तीनों चीज को मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ? मनी, स्पिरिचुअलिटी, लैंग्वेज. मे भी साथ में हम इसको इकोनॉमिक्स भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं. Because I am delivering some economic concepts in a different way. So this is what the intention of the Money Magnet program. This is the intention of this 21 question program. That ultimately you become who you want to become. और अगर आपने सीख लिया ना एक बार कि हाँ, अगर मैंने 21 weeks is good enough. If in 21 weeks you learned how to become what you want to become, then you can become anything. बस जिंदगी तो 21 महीने 21 वीक बाद खत्म नहीं होने वाली है ना. आफ्टर 21 वीक्स जो भी आपको अचीव करना है आपने अचीव कर लिया. उसके बाद लाइफ चल रहा है ना. लाइफ इज नॉट गेटिंग स्टॉप देयर, बट नाउ यू हैव ऑल द टूल्स to design the way you want to design your life. You don't need to depend on anybody. और मैं आपको बता रहा हूँ that see how I applied this whole thing. Let me come back to this, that how I applied this whole thing before I came into this training program, that 21 week training program. Over last, I would say almost last 3 to 5 months, I only focused on one new thing, and that new thing is how to publish a book. And I created a structure for it. And in that structure, I started working with my wife. I just told my wife that Dhruva, ये मैं एक structure बना रहा हूँ. I just want you to work with me in this structure, and we'll publish your first book. She agreed, and we started working on this. And we came out with a very simple structure. When we talk about publishing a book, it has 5 caveats. 5 उसका area है. The first one is writing a book. I will take a detailed session on this, so don't need to write anything. Or you can listen to this video also. The first one is writing a book. Second one is authoring a book. Third one is publishing a book. Publishing has 2 parts, editing and printing, followed by marketing, or last mein hai sales. So if you want to become an author who is going to publish a book, the journey is this, the route is this. यही route आपको follow करना पड़ेगा. So like tomorrow, if I declare myself that I want to become a author coach, या मैं आपको आप एक book लिखना चाहते हो तो मैं आपको कैसे guide करना चाहता हूँ. The first thing that I will come and ask you, you want to become a writer, you want to become an author? Answer the question, what is the difference between writer and author? Writer हो गया, मैंने कई जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, चैट जीपीटी में डाल लिया, उससे मैंने कुछ कंटेंट बना लिया, उसको मैंने थोड़ा सा रिफाइन किया, and I publish a book, or I created a content. वो होगा writer. Then comes authority, becoming an author. So when you're talking about becoming an author, then you become an authority on whatever you're writing. It's not just compilation of data. You are an authority on this. That मैं जो बोल रहा हूँ वो किताब में है, और जब मैं बोल रहा हूँ, you'll agree to it कि हाँ पिनाकी अगर तुम ये बोल रहे हो, it makes sense. That is what being authority is all about. Like I'm talking about these 21 questions. Pinachi, the first question क्या हो सकता है? So before I got that question, I studied these great people. उनका मैंने lifestyle study किया. For most of when I studied their Wikipedia page. वो शॉर्ट में उनके बारे में बताता है. जहां जहां मेरे को YouTube वीडियोस मिला वो सब मैंने देखा.
देखे पता कि what kind of person this person may be, what kind of questions he may be asking. When you listen to their YouTube videos or their audios, आपको ना पता चल जाएगा what kind of questions they ask. The moment I discovered that this is the question that he is answering to, what question he is answering to, हो सकता है उसने सवाल पूछा नहीं, but he just talking about it. I tried to figure out वो सवाल क्या पूछा होगा, खुद को क्या सवाल पूछा होगा जिसका जवाब वो ऐसे दे रहा है. That session which I took last Saturday on SOS, asking relevant questions. So throughout the day you are asking questions to yourself. Throughout the day, the only thing that you are doing, you are asking questions to yourself. और उसका जो जवाब मिल रहा है, या तो उसका एक्शन में कन्वर्ट करो, या तो आप लोगों से बात करो, खुद करो या तो किसी और को डेलीगेट करो. So I try to figure out what questions these people are asking themselves before delivering this talk. फिर उसको जनरलाइज करना, फॉलोइंग द मॉडलिंग, बिहेवियर मॉडलिंग प्रोसेस ऑफ NLP, जो हम मास्टर प्रैक्टिशनर कोर्स में बहुत डिटेल में करते हैं. बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन काफी डिटेल में करते हैं. उसको मैंने अप्लाई करना शुरू किया, कर करके. So I created a notebook which compiled all these questions. जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में जब I kept on noting them down, and then I came up with some core questions. And based on those core questions, I am designing this entire training program, which I am going to deliver in next 21 weeks. उसका पहला सेशन हो चुका है. So now, once I am coming out with this book, I become an authority on all those questions, right? So you ask me that question and I have the answer to it, even if I don't read the book. This is what about authoring a book. So when you're authoring a book, you become an authority on whatever you are putting in the book. उसके बाद आ गया पब्लिशिंग का दो हिस्सा है. एक है एडिटिंग, कॉपी एडिट करना, उसको तरीके से प्रेजेंट करना, और दूसरा है उसको प्रिंट करके निकालना. उसके बाद आ गया मार्केटिंग. अब अगर मैं मार्केटिंग नहीं करूंगा मेरे बुक का, अगर मैं उसके बारे में लोगों को नहीं बताऊंगा, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा. So you can say that I am marketing the book right now even before the book is published, as I am offering this entire training for free. I'm marketing, right? ऐसा ही है ना. So I'm marketing the program. या तो किताब पब्लिश करके करो, या तो पब्लिश करने से पहले करो. पब्लिश करने से पहले करने से क्या होगा, you can find all those mistakes which you won't do or which you won't commit when you actually author the book. Before you writing the book, you commit the mistakes, and you know that ये mistake मैंने किया, so I should not put this in the book, and I'll make sure that it is not there. This is how exactly all these great books have been written. हम जो किताबें उठा के पढ़ते हैं ना, साइकोलॉजी ऑफ मनी and every book that you think of, how to become a people magnet, or this book that we are reading right now, think straight, every book, atomic habits, ये सारी किताबें ना ऐसी लिखी गई. These people, they just started, उनके पास एक नोटबुक रहता है, उन नोट में जो भी उनका थॉट आता है, they keep on writing. Then they create a session out of it. Then they deliver that session. Either they're talking somebody to one-on-one, or they are putting it in a group of people or sharing it as a training program. और वहां पे जो मिस्टेक्स वो कर रहे हैं, या वहां पे उनके पास जो दूसरा थॉट, तीसरा थॉट आ रहा है, उसको उन्होंने तरीके से कंपाइल करके, then they put it in a form of a book, and then they post it. Then they created that book. सारे ऑथर्स ऐसी किताब लिखते हैं. इट इज लाइक, अगर हम साहिल ब्लूम की बात करें, द 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ, exactly same game. This is what they did. So if I want to author a book, what is the best way? आप एक सोच लेके काम करो, 10 लोगों से बात करो, उनको भी बताओ. जब वो उनको बताएंगे, वो आपको बताएंगे उनको क्या लग रहा है, सही लग रहा है, क्या सही नहीं लग रहा है, क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है. And then you can figure out these are things that people will take interest. So that's how you become an authority. That's how you come up with the book, and eventually need to do the marketing. Once the marketing is done, उसके बाद आता है सेलिंग. सेलिंग के लिए आज के डेट में हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. Amazon है, वो खुद ही बेच देगा. नोशन प्रेस है, वो खुद ही बेच देगा. वैसे एक दो और पब्लिशर्स है,
उनके इंटरेस्ट में वो किताब को बेचेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन का आज की डेट में आपके पास कोई टेंशन नहीं है ना। हमने ध्रुवा का किताब लॉन्च कर दी, इंडिया का पेपर बैक अभी कल परसों हम लॉन्च करने, इट इज ऑलरेडी रेडी, सो वी आर जस्ट फिगरिंग आउट द डेट। द बुक इज ऑलरेडी अवेलेबल on Amazon now, the paperback version, the Indian paperback version. So we are just putting up things straight, and I'm going to make the announcement maybe tomorrow or day after tomorrow about the availability of that book. Now this book was published internationally before the paperback was published in India. मैंने देखा यार ये बड़े बड़े राइटर्स, हाउ दे बिकम इतने बड़े बड़े राइटर्स। सो दे यूज्ड ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स टू मेक श्योर देयर बुक इज अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। अभी रोंडा बाइंड का एक बहुत प्यारा किताब लॉन्च हुआ है ना, इट इज अवेलेबल इन प्री सेल्स। 25 नवंबर है उसका लॉन्च डेट। हाँ, तो इट इज अवेलेबल इन प्री सेल्स, इट्स अवेलेबल एट डिस्काउंट। So even the book is available, she is doing the marketing. मतलब अभी भी उसके पास स्कोप है, उसमें अगर कुछ चेंज करना चाहती तो शी कैन चेंज, एंड शी इज मार्केटिंग द मार्केटिंग हर ट्रेनिंग और क्या बोलते हैं उसको, इंटरव्यूज अबाउट द बुक। यहाँ जा रही है, वहां जा रही है, लोगों से सवाल ले रही है, उसका जवाब दे रही है। So she is taking this whole 3 months to make sure that she started all these activities 3 months before, है ना। अभी उसका खाली एक ही मंथ रह गया किताब पब्लिश होने का। सो आई एम ऑब्जर्विंग हर व्हाट शी इज डूइंग, यू नो। जो बीनल ने अभी शेयर किया था ग्रुप में, तो बीनल के शेयर करने से पहले आई हैड एक्सेस टू इट, मिल गया मुझे, जैसे बीनल को वैसे ही मुझे मेरे को मिल गया। एंड सिंस आई एम ऑब्जर्विंग दिस ऑथर्स हाउ दे आर डूइंग, सो दैट इज द वे आई कनेक्टेड विद ऑल दिस ऑथर्स। मार्क लवक्लिफ के साथ मैंने कनेक्ट किया, अभी डारियस के साथ मैंने कनेक्ट किया। दैट्स व्हाई आई सेड दैट इफ यू राइट अ मेल टू डारियस, ही इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, ही रिप्लाइज टू योर मेल, है ना। तो that's how I learned small things, how they are marketing the book. Some of you were with me in that 5 types of wealth जब उसको हमने किया था, है ना। वो भी वही था, I was studying that how this guy is marketing the book, और उसको लेके हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल है। I also checked कि अगर कोई किताब लिखना चाहता तो उसको लिए उसको हम कैसे इंस्पायर कर सकते हैं। तो आप बस बोलो, उसी से हम we can help you to write a book, even if you don't know how to write. I tested all those chat GPT and other things. वो मैंने एक सेशन में मैंने दिखाया भी कि हाउ आई क्रिएटेड ऑल दी स्टोरीज आउट ऑफ योर शेयरिंग्स। छोटा छोटा जो स्टोरीज मैं बना बना के ग्रुप में डालता था, हाउ आई डिड दैट, आई अप्लाइड ऑल दीज थिंग्स। डिड यू सी द कनेक्शन that whatever I am sharing with you, or I am going to share with you over next 21 weeks, I told you that I am already practicing it for last 5 months, 6 months, है ना। तो वो सोच के आज मैं जो अपने आप को डिक्लेयर किया था, ठीक है, कम नवंबर आई विल बी इन अ पोजिशन टू पब्लिश अ बुक, एंड मैं चाहूँ तो आई कैन बिकम अ बुक पब्लिशिंग कोच ऑल्सो। आई विल नॉट डिक्लेयर माई सेल्फ एज एन ऑथर कोच और बुक कोच, आई विल डिक्लेयर माई सेल्फ एज अ बुक पब्लिशिंग कोच फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने अब वही सोचा था कि कम से कम ये मैं बन सकता हूँ। लेट मी पुट इट टुगेदर, लेट मी सी व्हाट इज पॉसिबल। उसके लिए मेरे को समय मिल गया, रिसोर्सेस मिल गए, सब कुछ मिल गया, पीपल लोग मिल गए, एंड नाउ आई एम टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। चलो जिस जो जो बनना चाहते हैं, तो वहां पे मैंने ये सब सीखा कि लाइफ पर्पस होने से ही काम नहीं होता। तो हमारा क्या था, एनएलपी इन एक्शन का जो प्रोग्राम था, इट ऑल स्टार्टेड विद लाइफ पर्पस। इट स्टार्टेड विद अ गोल सेटिंग, so we put up one full week for getting a goal setting done, उसके बाद work on that goal for next 7 weeks to get that goal। तो आई डिस्कवर दिस, सिर्फ पर्पस सेट करने से काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज वहां पे लोग ये सेट नहीं कर पा रहे हैं या कर रहे हैं कि व्हाट आई वांट टू बिकम वंस दिस कोर्स इज ओवर, वंस आई अचीव दिस। उसमें से बनूं मैं, क्या बनने वाला हूं वंस आई अचीव दिस रिजल्ट्स। So based on that, I created this thing and I started delivering it to you. So now you got a sense that how all these things are connected. Money Magnet program, this 21 question program, या ट्यूजडे जो मैं अलग दूसरे अलग अलग सेशंस पे बात कर रहा हूँ, हाउ दीज थिंग्स आर कनेक्टेड। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम इनवाइटिंग यू टू फोकस ऑन एज वेल। मैं ये सारा टूल्स अभी आपको देने जा रहा हूँ।
So naturally, unless you work with yourself, you will lose on this opportunity as well. So this is not a New Year resolution. This is a new life resolution. You are creating a new life for yourself over next 21 weeks. और एक चीज, ये चीज अगर आप लोग सीख गए ना, श्रुति, राजेश्वरी, ये चीज अगर आप लोग सीख गए ना, हाउ टू बिकम व्हाट यू वांट टू बिकम, यू कैन गो अहेड एंड टीच एवरीबॉडी. बिकॉज आपके सामने आप खुद ही एक प्रूफ हो. आप हर कदम पे लोगों को बता सकते हो, देखो मैंने ऐसे स्टार्ट किया था, ऐसे ऐसे आई टुक द स्टेप्स एंड दिस इज हाउ आई बिकेम व्हाट आई डिक्लेयर्ड माय सेल्फ टू बिकम. यू हैव ऑल द प्रूफ. जैसे मैंने अभी शेयर किया आपके साथ, you have all the proof. I started with that Sahil Bloom thing. I continued that in Sunday morning sessions. We are continuing that in everyday morning call. Monday to Saturday हम लोग जो सुबह 6:30 बजे कॉल कर रहे हैं. These are all connected. Like you can see the connection now, how these dots are all connected. ठीक है? Good session. So अपने आप को ना उन वो जो हमारे जो लास्ट 3 वीक्स का जो चैलेंजेस थे, what we discussed in the last 3 weeks about in our Money Magnet program, उसके साथ जो भी associated activities थे, just make sure you are free from all those money related guilts in every possible way. These are all money related guilts that you are carrying with yourself. Some you know, some you don't know. Some you are aware of, some you are not aware of. Just be aware of and just set yourself free from all those things. So that आगे की जिंदगी आप you can live being money free, money guilt free, sorry, being money guilt free. ठीक है? Done? Okay. Stay in the vibrations. I will share this video as soon as it is available and make your life amazing. चलो. Okay, bye. Thank you Pinaki ji. Thank आज you. फोटो लेना भूल गया. रुको फोटो ले लेते. हाँ, मैं भी वही सोच रही थी. Oh, we missed. Okay, here we go. Quickly. Rajeshwari बिचारी आज बहुत थकी हुई है, but anyway, thank you so much for being in the session. You know, God bless you. God bless you. Yeah, here we go. So 1, 2, 3. Thank you so much. Good. Post it. Good night. Good night. कल मिलेंगे शाम को 8 बजे.